Assalamu alaikum everyone. Those who have joined, if you can hear me, can you please post or comment on this live session? And we'll wait for 5 more minutes and we'll begin. For those who have joined the live session, can you please comment for me to know that I'm audible or not? Okay, great. Thanks, Ahmed. So we're waiting for 5 more minutes and then we'll begin the session for today. Thanks, Shabiha. I hope I'm pronouncing your name correctly. Okay, guys, so not exactly 5 minutes, but I think there's enough audience for us to begin this session. And as more and more people join, maybe I can recap what I've started off with. So, Bismillahirrahmanirrahim. This session today, as it is titled or as it is named, Interview Tips and Tricks, a quick introduction of my own self. My name is Marium Farooq, and I'm a chartered accountant by profession. I qualified back in 2014. It was winter 2014 when I qualified, and since then, and I did my articles from KPMG, Tasi Hadi and Company. Post that, I associated myself with industry, so I'm working with one of the MNCs in Pakistan. And fortunately or unfortunately, I've not really been associated with the students community or with the academia since I completed my qualification. But when I went through the initiative of these online lectures on the CA counselors group, I thought it's the time that I should be giving some input to these initiatives and help the students community. So if there are questions during the session regarding the course or the academia, I would not really be able to help you right now because I'm not much into what you guys study. But this session today will entirely be focused around how to give your best at the interviews. So the flow of today's session is going to be, first, we're going to talk about why the interviews are so important and why you need to prepare for them. So as easy as that, आप ये कह सकते हैं कि you want to land into the best firm or the best industry for your articles, and that's why you want to learn on how to rock at an interview. But
there is more to it. There is more to the interview sessions, and why they're so important for your career coming ahead. So we'll be talking about the importance of the interviews, and then we'll be moving towards the main session. So it is not just going to be the tips and tricks, but we're going to go through the idea of how an interviewer thinks when he is interviewing you, and what are the phases in which he decides whether he wants to have you on board or in his or her company or not. And then we'll be talking about the criteria. So जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर के दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपको किन क्वेश्चंस पे जज कर रहा है, एंड डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं. So उसके बारे में हम बात करेंगे. Thirdly, हम बात करेंगे कि जनरल FAQs या frequently asked questions क्या होते हैं. So at this stage, जब आप I understand कि जो अभी हमारी audience है, the one who is viewing these videos, is primarily the CAF students जिन्होंने अभी अपनी latest attempts दी हैं, या maybe they're CAF qualified and they're soon going to pursue the interview sessions which are going to happen at firms and at industries. तो बहुत important है कि आपको पता हो कि general questions क्या पूछे जाते हैं in an interview and how to smartly answer them. उसके बाद हम बात करेंगे की watch outs पे कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए in an interview to avoid any negative marking. So technically there is no marking in an interview, but still there's a negative marking in the interviewer's mind. वो क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखकर we can avoid those negative elements of the interview. And lastly, the floor will be open for you guys to ask any questions that you want. So question and answer session हम throughout भी चलाएंगे. It's not going to be a monologue. If you guys want to ask any questions in between, you can comment and I'll be happy to answer them. But if I feel कि वो चीज़ आगे जाके discuss हो रही है, or if I feel कि it needs a detailed answer or detailed help, तो फिर हम उसको towards the end of session Q&A में cover कर लेंगे. So yeah, so this is all about how we'll move forward for today's session. सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि we need to understand कि interviews की importance क्या है for you as students. Why is it so important for you to be the best at your interview? तो बहुत simple सी बात है. You are starting your careers and you need to step into the industry or the firm as a brand. जिस तरह का दौर और जिस तरह के era में हम रह रहे हैं, people never like general things. They like special stuff, they like branded stuff, and they like stuff that's unique and special. It's very important कि जब आप industry या firm में step in करते हैं, when you are stepping into your professional lives as a chartered accountant to be inshallah, you need to have something special in you to present to your interviewer and then to the wider world, which makes you stand out from others. So आज की date पे I can't really recall 7,000-9,000 chartered accountants हैं. माशाल्लाह many more to come. हम देख रहे हैं जितनी तादाद इस वक्त students की enroll हो रही है. So how are you different from others, and how would someone want you as their employee or a trainee and not the other person? So it's very important at this stage only that you develop yourself as a brand, you work on your brand equity, and you land your best at the interviews. So interview is going to help you tell the world कि आप कौन है, आप में क्या खूबियां हैं, why should they have you on board. It also helps you in better placements. So अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो आपको अच्छी जगह ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी, and so on and so forth. And then it prepares you eventually for your job interviews as well. So you must have heard a lot of professionals. In fact, when I see my professional career, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इंटरव्यूज देते रहने चाहिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. So it's not just that कि आपने एक जगह CV ड्रॉप की and you just went into the interview unprepared and आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. It's not like that. The stage at which you guys are currently, it's important कि आप प्रिपेयर करें, आप अपने आंसर्स को फ्रेम करके जाएं. I wouldn't say कि आप
आंसर्स याद करके जाएं, but I would say आप you should have a clarity in your mind about what you are and how you need to present yourself. So it's going to help you get ready for your job interviews as well. आप अभी इस वक्त शायद 5-6 firms में interviews देंगे, industries में interviews देंगे. So you're going to get a really good experience of how an interview is like. जो pressure या stress होता है interview का, that's kind of going to be released जैसे जैसे आप और interviews देते जाएंगे. तो in a trucks, if I kind of summarize the entire idea, 1, better placements. 2, helps you develop as a brand. 3, helps you work on your brand equity. 4, able to be prepared for a better professional growth. So इस idea के साथ we'll be moving forward. And as we move forward, you will see that there are certain areas or certain questions or certain things which I will keep open for you guys to interpret and to think on, because वही areas हैं जो आपको दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ बनाएंगे, एंड वही एरियाज हैं जिन पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत या थोड़ी सी क्रिएटिविटी शो कर दें तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So this was quickly on what the importance is. If you move on the first session or the first segment of this session, guys, on this piece, if you have any questions, please free to ask, because I'll be really happy. Or if there's any disruption or anything, you can mention, and then we can move on to how an interviewer thinks in an interview, and how does an interview move like. Assalamualaikum Tabish, it's really nice to see some old people with you, those who have you've worked with in the firms and all. So it feels really good to kind of connect with those. Shazeb, yes, syllabus questions are definitely asked. So as we proceed further, हम discuss करेंगे कि आपको उसके लिए भी कैसे prepare करना है. But I'm sure at this point in time, because you have just given exams, तो बहुत easy होता है syllabus questions answer करना, but बहुत मुश्किल होता है non-syllabus questions answer करना. तो हमारा focus होगा to understand कि non-syllabus questions के साथ क्या करना है, and then syllabus questions को भी कैसे handle करना है. We'll discuss that. अभी ये रेफरेंसेस आप किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं? जो फर्म की फॉर्म्स में रेफरेंसेस पूछते हैं, आप उसकी बात कह रहे हैं, या यू जनरली टॉकिंग अबाउट रेफरल्स एट द जॉब्स? प्लीज क्लैरिफाई. जीशान, हम इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, सो नॉट एनी स्पेसिफिक सीए सब्जेक्ट, बट इट इज द सेशन टुडे इज to help you guys prepare for your interviews. जो upcoming interviews आपके आने हैं उनके लिए prepare करने के लिए. शाजिब, हम करते हैं अभी general questions को discuss के किस तरह के questions होते हैं. Okay. So हमने बात की कि interview के कुछ phases होते हैं. Interviewer के दिमाग में कुछ criteria होते हैं जिसकी basis पे वो आपको judge कर रहा होता है. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू कंपेयर कि यार उसका 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसका आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ, मे बी वो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा, थिंग्स लाइक दिस. सो इंटरव्यू ड्यूरेशन डजंट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट ऑफ द इंटरव्यू, एंड व्हाई द टाइम डजंट मैटर इज बिकॉज द इंटरव्यूअर breaks down the interview into 3 key processes, right? 3 चीजें उसने करनी है, जिसके लिए वो आपसे कुछ सवालात पूछेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट डिसाइड होगा कि आप सिलेक्टेड हैं, आप शॉर्टलिस्टेड हैं या नहीं है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले 5 मिनट ऑफ योर इंटरव्यू, व्हेन यू वॉक इन, व्हेन यू ग्रीट, और मे बी अ कपल ऑफ स्टार्टिंग क्वेश्चंस. वो स्टार्टिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं हम बात करेंगे उन पर. उस प्रोसेस में इंटरव्यूअर अपना माइंड बनाता है.
कि क्या जो मैं क्वालिटीज ढूंढ रहा हूँ अपने कैंडिडेट में वो उसमें है या नहीं। एक फर्स्ट फीलर आ जाता है उस इंटरव्यूअर को कि द वे दिस पर्सन हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, द वे ही हैज ट्रीटेड मी, द वे ही हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस, कितना कॉन्फिडेंस है, क्या स्ट्रेस लेवल है। इन सारी बेसिस पे वो एक फर्स्ट जजमेंट बनाता है कि whether this candidate is good enough or not. And this is just the first rough sketch जो उसने अपने mind में बनाया. It's as simple as that कि when you enter a shop and when you see a product from very far, आपको उसका कलर शायद पसंद आ जाता है, you feel कि you know इसका feel अच्छा होगा, इसका texture अच्छा होगा, so something of that sort कि बिल्कुल first idea or the very first sketch of whether this candidate is really what I'm looking for or not. Mind making के बाद is the phase where the interviewer is trying to decide, where the interviewer wants to confirm कि जो first sketch उसने बनाया था वो सही भी है या नहीं. And how will the interviewer do it? वो आपसे टेक्निकल या एजुकेशनल क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे शाहजेब ने कहा कि भाई सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं, तो यस सिलेबस के क्वेश्चन वो पूछता है टू अंडरस्टैंड कि यार आप बिकॉज आप सीए के स्टूडेंट्स हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, जो कि जनरल केसेस में हमें होती है. ठीक है, आपसे वो लॉ के क्वेश्चंस पूछेगा, मे बी बीएमबीएस पूछ लेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछेगा, ऑडिट स्टैंडर्ड्स पूछेगा, टू गेट द आइडिया कि आपको अपना अपना कोर कितना पता है. बिकॉज यू सी वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट आवर कोर. अगर आपका कोर वीक है, आपको अगर अकाउंटिंग नहीं आती, आपको अगर ऑडिट नहीं आता, आपको अगर बीएमबीएस नहीं आता, देन इट्स यू नो जस्ट नो ब्रेनर. मतलब फिर आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो योर कोर इज इम्पोर्टेंट. And then core के बाद is where your interpersonal skills and your softer skills come, and how you present yourself and how you present, how you you know kind of ensure the interviewer कि आप ही वो best candidate है जिसको select करें. तो सबसे पहला सवाल इसका यही होगा, technical and educational questions. सेकंड एरिया जो कि इंटरव्यूअर्स जनरली टच अपॉन करते हैं, अगर तो वो श्योर नहीं है आपकी पिछली डिस्कशन से या आपके इनिशियल ग्रीटिंग या इनिशियल इंटरेक्शन से, they will ask you behavioral questions. अब what is behavioral question means is कि वो आपसे पूछेगा, he might put you in a scenario कि let's say you're working in a team of 5 or 10 people, जिसमें आपके एक supervisor है, आपके एक मैनेजर है, and you have a co-worker with you. जो आपके supervisor है, let's say he is giving undue favors to your co-worker, and you see कि उससे काम की क्वालिटी इफेक्ट हो रही है, you see कि उसमें आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है. What are you going to do? How are you going to deal with this situation? So that's where he is going to gauge कि आपकी टीम वर्क, आपके एस्केलेशन के तरीके क्या है, and how do you handle situations where your supervisor is not supportive enough. This was one example. There can be another example where you say कि एक client दे दिया आपको, you have to do it whole and soul on your own, आपने पहले कभी नहीं किया, वो इंडस्ट्री पहले कभी ऑडिट नहीं की है, and you were just told कि अगले 10 दिन में आपने वो क्लाइंट खत्म करके आ जाना है. How will you do it? What will be your approach of you know kind of delivering your best? ये एक behavioral question हो सकता है. There can be another behavioral question, for example, because आप लोग students हैं, and you know when you complete अपनी registration period का कोई 1.5 साल complete करते हैं, आपकी attempt होती है, तो बहुत बार ये होता है कि एग्जाम्स की लीव्स आपको पूरी नहीं मिल पाती. यू आर डेजिग्नेटेड 60 days लीव्स, 15 days पर पेपर, बट क्लाइंट ऐसा है आपको छुट्टियां नहीं मिल सकेंगी, आप क्या करेंगे? How are you going to react in those situations? And based on this is how interviewer is going to judge you. अच्छा, इस तरह के questions में honestly you have to, ये कुछ general questions हैं, you can prepare these in your mind कि आप क्या answer करना चाहेंगे. My tip or my suggestion for such questions is please be honest. You shouldn't you know try to manipulate your statements,
and you shouldn't try to manipulate or present yourself as something which you are not. अगर आपको लगता है कि पहली सिचुएशन जिसमें मैंने आपसे बात की कि सुपरवाइजर अनड्यू फेवर्स दे रहा है कोवर्कर को एंड आपको पसंद नहीं आ रहा, एंड इफ यू थिंक और इफ यू फील कि you are someone who will maybe continue with it and maybe continue delivering your best, say that. You don't need to do any hayways and tell कि भाई मैं ये smartness दिखा दूंगा या वो smartness दिखा दूंगा. There's no point of being something which you're not. You should be clearly very honest and tell them maybe it doesn't matter to you, or you can maybe tell them you would prefer escalating, but you have to tell them the positive ways of escalations. For example, a positive way of escalation could be कि मैं अपने supervisor से a friendly discussion can be there with him or her, and I can tell him or her that I feel I'm being treated unfairly, and I would request, because you are a positive and a very good leader, I would request कि जो है आप मेरे इस concern को दूर करेंगे. So just saying कि मैं escalate करूँगा can be negative, but explaining how you're going to escalate it, the steps of escalation, if you tell that, it's going to be a positive answer. And that's where the interviewer is going to judge your behavior कि आप किस तरह से conflict resolution करते हैं. Second example जो हमने बात की थी कि you are given to do a client which you have never done before, a very new industry, and you have to complete it within 10 days. How are you going to do it? There could be a way, या बहुत honest answer हो जो हमारा general reaction होता है. Bilal, sorry guys, we're just interrupting here. It's not necessary, Bilal. You can definitely give answers in Urdu. It's better कि आप जिस language में convenient हैं, जिस language में comfortable हैं, उसी में answer करें. The interviewers generally appreciate that fact. So it can be a mix of both. बहुत बार होता है कि हम इतनी इंग्लिश बोलने जाते हैं कि इंटरव्यू को लगता है कि you're trying to again portray something which you're not. It's better that you be natural. आप उर्दू इंग्लिश दोनों में बात करें. In fact, most of the times it happens that when you are having a discussion like this, जैसे अभी हम behavioral questions की बात करें, in questions में the interviewer has plotted a scenario for you, and similarly you are answering within that scenario. So it's a very natural scenario, and you can use Urdu to answer those questions कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये steps करूँगा, and things like this. So be natural, and that's the biggest tip that I give. Be honest, be natural. So we'll be talking about this throughout the session. Please don't try to portray something which you are not. So हाँ, हमने बात की कि भाई 10 दिन में आपने एक क्लाइंट खत्म करना है, what will do? एक जनरल हमारा रिस्पॉन्स होता है इन these situations, जिन्होंने फर्म ज्वाइन की हुई है या जो सीनियर लोग इस वक्त देख रहे हैं, you would surely know what we might have been in a panic situation, talking to our seniors कि हमसे नहीं होगा, हमें कोई जूनियर दे दें या किसी और से करवा लें, things like these. Or maybe we would try to bring in excuses like पिछला client खत्म नहीं हुआ, उसका काम बाकी है, electronic files complete करनी है, things like these. A very good answer to such questions, you should show the positivity that you are there to learn and you're happy to learn, because this is the behavioral question or the scenario that the interviewer has put you in, is to see how good you are at accepting challenges. So you have to show the interviewer, okay, how will you deal with this challenge? As simple as this. I'll talk to maybe my partner or manager, understand what the procedures are, do self study, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 10 दिन में शायद efforts लगानी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, but there's nothing in the world that cannot be done. So with the help of the seniors and the managers and with their guidance and with the guidance of, let's say, firms की जो internal policies and audit manuals होते हैं, I'll try to deliver my project within 10 days. And since उन्होंने 10 दिन की बात की, you can also talk, you will try to do your work in piecemeals. आप छोटे छोटे goals बनाएंगे, milestones बनाएंगे, because it's the first time that you're doing a 10 days assignment. तो आप कोशिश करेंगे कि you have milestones and you achieve them. So this could be one positive answer. ठीक है. Third चीज हमने बात की थी
एक सिनेरियो की कि जहाँ पे आपको एग्जाम लीव्स नहीं मिल पा रही हैं. You have to go for exam leaves, which is very important for every student. बहुत pressure होता है and आपका client खत्म नहीं हो पा रहा, so you can't get your exam leaves. Very honest answers to these. You can tell them it's your right, you would need it, but at the same time you will try to convince your manager how your absence will not affect the task. ठीक है. तो the best way is again जो हमने first scenario में बात की कि I will have a dialogue with my senior or my manager or my partner to explain him कि देखें ये काम रहते हैं जो मैंने अपनी लीव्स में कंप्लीट करने हैं, but they are not something which no one else can do at this point in time. So I will make sure कि मैं handing over proper करूँगा. जो भी मेरी placement में काम करेगा, I'll explain him the work properly and I'll make sure कि वो बंदा quality deliver करे. But for me, the leaves are also important and I would want to have them. So these are the kind of behavioral questions that that the interviewer will ask you to confirm his decision or the initial sketch that he made in his mind in the beginning. Okay, Idris, we will answer your question during the Q&A session. तो आप please जब हम Q&A के लिए floor खोलें तो do ask this question again. We'll answer this. So this was about behavioral questions. Then the interviewer can also ask you analytical questions. ठीक है, analytical I'm sure आप लोगों ने audit में analytical procedures बहुत पढ़े होंगे. So maybe directly audit related ना हो, maybe audit related भी हो. But he can tell you कि कंपनी की सेल्स ये थी एंड अब ये है, कंपनी की मार्केट इंफॉर्मेशन ये है एंड वेदर यू फील कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इशू है या नहीं है, वेदर यू फील कि सेल्स में जो हाइक आया है लेट्स से 15 और 20% हाइक इन सेल्स ऑफ अ कंपनी जो कि जनरली इकोनॉमी के गिरने की वजह से general market trend या general industry trend है कि no one is performing but that company is performing with a 20% growth or a 50% 15% growth. What analytical procedures will you apply to ensure कि उनके results forged नहीं है या manipulated नहीं है? Now you can say that maybe this is a kind of audit related question, but I disagree. It's not a syllabus question. It's a basic analytical question. We as chartered accountants and auditors are always told to be skeptical, and we are always told to be questioning in our minds. तो यहाँ पे आपका वो questioning और skeptical जो ability है, the examiner is going to check that. Lastly, the decision-making questions or the business-related questions which the interviewer can ask you. Generally, इस तरह के questions when I had been taking interviews of CA trainees and when I had taken interviews of others as well, कुछ questions हम इस तरह के पूछते हैं कि there's a product. So let's say maybe this is a pen that's there on the desk, and we tell the student कि आप इस पेन का एक business case बनाएं and tell us how you're going to sell this pen. So not selling from a marketing point of view, but from a business or financial angle कि आप इसके business case को कैसे strong बनाएंगे and इसकी क्या pricing करेंगे, क्या costing होगी, and कितना time period होगा जिसमें you're going to ensure कि आपका business profitable हो and break even से ऊपर चला जाए. So maybe you can prepare for yourself for any one product. Maybe a cell phone or a pen or a bag or anything, maybe a product or a service, and उसके लिए थोड़ा सा brainstorm करके रखें. Again, that's where your creativity comes and that's where the idea of thinking before an interview comes. जब मैं बात कर रही थी कि you need to frame your answers. You don't need to learn the answers for the interview, but you need to frame your answers beforehand. तो आप किसी भी एक product या service को लेके you just think in your mind कि क्या deciding factors होंगे आपके to launch the product, to price the product, and to market the product. So marketing strategies क्या होंगी आपकी, pricing किस basis पे करेंगे, क्या एक general span होता है. So for example, I say कि मैं किसी service industry में चली जाऊँ और एक architect firm का business launch करूँ, तो payback period क्या होगा, कितने साल में मुझे लगता है कि उस company को profitability drive करना शुरू कर देनी चाहिए. Now these questions, these don't have any concrete answers. Being very honest, इनके कभी कोई concrete answers नहीं होते. The interviewer here is trying to check कि आपका thought process कितना clear है, आप कितना phases में चीजों को लेके चलते हैं, and कितना phases में उसको explain करते हैं, right?
So you need to, whenever such question is asked, there's no need to hurry into answering it. आप एक मिनट लें, you kind of mind map this, and maybe you can practice it. I've always loved to tell people that practice is very important. I've always loved to tell people कि बगैर practice के कुछ नहीं होता. So when I say कि इसकी practice करना ज़रूरी है, what I would suggest is कि आप कोई भी product या service उठाएं और उसका mind map draw करके देखें कि अगर एग्जाम इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछ लिया कि एक प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचनी है, तो how quickly can you frame a answer for that, right? आप पेन डाउन कर लें कि ये 4 चीज़ें जो मुझे समझनी पड़ेंगी उस प्रोडक्ट के लिए, कि मार्केट कितनी अच्छी है, लोकल मार्केट है, फॉरेन मार्केट है, लोकल है तो लोकल में डॉलर डिवैल्यूएशन के क्या इश्यूज हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्या हैं, ओवरऑल कंज्यूमर नीड्स क्या है, क्या मैं नीश मार्केट को केटर करूंगा, एंड दीज आर BMBS कॉन्सेप्ट्स अगेन, क्या मैं नीश मार्केट को केटर करूंगा या मैं बॉटम ऑफ द पिरामिड को केटर करूंगा, बॉटम ऑफ पिरामिड को केटर करूंगा तो मेरे लिए प्राइस पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एंड उस प्राइस पॉइंट्स पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी या क्रॉस मार्जिन किस तरह का होना चाहिए, मेरे स्टेक होल्डर्स कौन है, शायद मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर कोई और है बिजनेस का, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कितना जल्दी बिजनेस को प्रॉफिटेबल देखना चाहता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इफ यू टेल द इंटरव्यूअर कि यार ये सारी चीजें मैंने सोची हैं इन दिस डिसीजन मेकिंग सिनेरियो, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप दिमाग लगा रहे हैं. तो क्विक रिकैप, हमने बात की कि इंटरव्यू के फेजेस क्या क्या होते हैं. हमने कहा 3 फेजेस. फर्स्ट जिसमें वो माइंड मेकिंग करता है, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आप देखता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करें, बोथ इन टर्म्स ऑफ योर आउटलुक एंड इन टर्म्स ऑफ यू आर टॉकिंग. एक रफ स्केच उसने बना लिया है कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, देन वो कंफर्म करना चाहते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, एंड फॉर दैट व्हाट ही इज डूइंग इज he is asking you technical or educational questions, he is asking you behavioral questions, he is going to ask you analytical questions, and lastly decision making questions. ये सब करने के बाद the third stage is where the interviewer is just giving you some room to again settle down, and he is making up his mind on concluding whether you're good or not. and ये उसी वक्त होगा कि जब आपने mind mapping stage और decision making stage में ऑनेस्ट आंसर्स दिए हैं, सो दैट ही इज एबल टू कनेक्ट कि जिस तरह के आप इंसान हैं, जिस तरह से जितना कॉन्फिडेंटली आपने अपने आप को इनिशियली प्रेजेंट किया, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप अपने आइडियाज भी प्रेजेंट करते हैं. सो दैट ब्रिजिंग इज गोइंग टू बी डन बाय द इंटरव्यूअर, एंड दैट्स वेयर ही इज गोइंग टू कंक्लूड. कंक्लूजन के फेज में मोस्टली द इंटरव्यूअर आस्क्स यू टू और ओपन्स द फ्लोर फॉर यू कि आप भी कुछ क्वेश्चंस पूछें. So when we're going to discuss the key watch outs, उसमें I'll tell you how to go about that phase, because it's a very interesting one जिसमें आपको room मिलता है कि आप questions पूछें, and smarter questions increase the chance of being selected. So this was about the 3 phases of the interview. Then the third segment of the session where I was mentioning कि कुछ criteria हैं, कुछ key questions होते हैं उसके दिमाग में जिसकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि whether you're through or you're not. First, and इसको मैं generally relate करती हूँ with the WH questions. आपका what, where, why, how. Very first, how. How do you look and how do you present yourself? Again, presentation in terms of your dressing, presentation in terms of your body posture, and presentation in terms of the confidence that you have when you're answering and when you're deciding, and also the honesty again, कि आप कितना honestly चीजों को answer करते हैं. The second WH question is that what do you know so far? What do you know about the firm? What do you know about that company? What do you know about your own core? Again, जब हमने technical questions की बात की कि वो पहले judge करे कि how, then he's judging what, आपको कितना पता है. So here I generally also suggest the students कि आप सिर्फ इस बात पे focus ना करें कि वो syllabus के questions पूछेगा या नहीं, वो सिलेबस के कौन से क्वेश्चंस पूछेगा. यू ऑल्सो नीड टू नो सम जनरल नॉलेज, स्पेशली जो लोग इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं. यू शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट द फैक्ट कि आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए. यू शुड हैव द आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वाज हाउ, देन इट वाज व्हाट, देन द थर्ड पीस इज व्हाई. So the why is important because again, जो शुरू में हमने बात की the brand equity or the brand building. What is your USP and what is your unique selling point?
जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप देखेंगे कि एक बच्चा ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए गया हुआ होगा, आप लाइन में वेट कर रहे होंगे, शायद 2 लोग और आपसे पहले वेटिंग में हों और शायद 5 लोग आपके बाद भी वेटिंग में हों, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी, एंड वो 1 घंटे का स्लॉट है जिसमें शायद 8 लोग इंटरव्यू देने आए हुए हैं, एंड दिन में शायद 2 या 3 घंटे पर डे इज इंटरव्यू बीइंग हैपेंड। You can see clearly see the kind of competition that's there. You have to convince the interviewer or the interviewer is seeking कि यार आप में क्या different है जो बाकी आपके बाद आने वालों में या आपसे पहले जाने वालों में नहीं था. So you have to prove what's unique in you, and this is one piece which I am not going to answer, and I'm not going to give any examples of this piece. Reason being कि अगर मैंने आपको example दे दी कि unique selling point क्या होना चाहिए, तो your creativity ends there. You're not going to think कि आपकी USP क्या है. Maybe we can have a very quick or a very short session in a week's time or so on your branding or your USP. लेकिन इस वक्त I will leave you open with the ideas. You need to think कि why you are different from the other person who is going to come after you. How, what, why, and lastly where. So we have always I think किसी ने referrals की भी बात की थी यहाँ पे, and strong CVs की भी हम बात करते हैं. By where here I mean is कि what is your future outlook, and whether you are just taking or seeking help from people to be where you are, or you are independent enough to decide your career paths. So a very very cliche question, हम FAQs में भी discuss करेंगे. बहुत cliche question होता है interviewer का कि where do you see yourself in next 5 years, 3 years, 10 years, 10 years down the line, where do you see yourself? And that's where you need to be very clear कि आप अपनी life में, especially in your profession and your career, what do you want? आप फर्म के पार्टनर बनना चाहते हैं, आप मैनेजर बन के इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं, you want to move abroad, you want to and maybe why abroad? For a better standard of living. There could be people who could be very honest, telling I remember my interview with Ferguson where I told them that I never liked to become a chartered accountant, and I always wanted to do something creative or something artistic. So 5 years down the line, maybe I would want कि मैं अपना career completely pursue कर चुकी हूँ, and then I work on my hobbies. So that could also be one of the answers. And that doesn't show non-seriousness, honestly. काफी लोग कहते हैं कि अगर आप ये बता दें कि आपको आपकी हॉबी ज्यादा पसंद है और प्रोफेशन या करियर ज्यादा नहीं पसंद, तो the interviewer might think कि आप non-serious about your profession. That doesn't really happen. So that doesn't really happen. What happens is the interviewer, you have to convince the interviewer in the sense that despite the fact कि जो आप profession pursue कर रहे हैं, that's not your core interest, उसके बावजूद you're performing so well in it, right? So that's how you land your point. Quickly summarizing again, basic questions or basic ideas which the interviewer has in mind: how you present yourself, the how part, then the why part, why you and why not the other person, and that's where unique selling point comes, the USP. आज जब सेशन खत्म हो जरा सोचना शुरू करें कि what your USP is, because you see जिस तरह से फिंगरप्रिंट इस दुनिया में हर इंसान का डिफरेंट है, जिस तरह से लाइफ और जर्नी हर इंसान की डिफरेंट है, उसी तरह से हर इंसान की क्वालिटीज भी डिफरेंट है. अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है. It's just that we don't know our uniqueness. So after today's session, kind of food for thought is something of that sort. You need to go back and think what's unique in you, something which you can tell the interviewer. Okay, तो आपको इंटरव्यू को बताना है कि आप कैसे डिफरेंट हैं. Then what do you know about the firm, about the world, about your country, about your profession, or even if it's your hobby, about your hobby. बहुत बड़ी गलती होती है, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी हॉबी क्या है, आपने कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी होती है, and you tell them that I love book reading, and the next question comes is which writer do you read, and वहाँ खामोश हो जाते हैं. और what genre do you read? आपको फिक्शन पसंद है, आपको हॉरर पसंद है, क्या पसंद है? You don't have an answer, and that's why here again I say you need to be honest. जो आपकी ट्रू हॉबी है आप वो बताएं, and then ये भी बताएं कि what do you know about that hobby. And lastly where, which is like what is your vision going ahead,
what is your purpose in life, and where do you see yourself in 5 years. Again, repeating, when the interviewer asks you where do you see yourself in 5 years, he means where do you see yourself as a person and not as a professional. फर्म जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आप ये जवाब दें कि आपने पार्टनर ही बनना है, पहली बार 5 साल में कोई पार्टनर नहीं बनता या मैनेजर ही बनना है. तो an answer to this question is never going to be in terms of your career. He wants to know as a person आपके अंदर कितनी डेप्थ है and आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं. So these were the 4 basic questions or criteria that we talked about. इसके बाद हम बात कर सकते हैं on the frequently asked questions कि एग्जाम्स में जो है, again I'm sorry not exams, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर जनरली सबसे पूछता है. तो क्योंकि वो सबसे पूछता है, आपको पहले से पता होता है, आपके फ्रेंड्स इंटरव्यू देके आप उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या पूछा था उसने, तो आप भी उसी की प्रिपरेशन कर लेते हैं. तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जिनमें अगेन कुछ के आंसर्स हम यहीं पे डिस्कस करेंगे. आई टेल यू सैम्पल आंसर्स और एग्जांपल्स कि आप ये जवाब दे सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं विच आई प्रेफर कि आप खुद सोचें एंड थोड़ा सा खुद उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें. But nevertheless, if you guys feel that you will need answers from me, we can definitely discuss that as well. So before we move on to the FAQ session or the segment, if there are any questions, Shazib, but abhi the very next part is this only. कि how do you answer your what is your weakness question, तो हम इस पे अभी बात करेंगे, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. Any other questions that you guys have in mind which we need to discuss? Okay, so I think there are no questions as such, so we can move on with the frequently asked questions. Okay. बहुत सारी चीज़ें इसमें से हम कवर कर भी चुके हैं ऑलरेडी, बट बात करेंगे. सो वी स्टार्ट विद शाजीब्स क्वेश्चन ओनली, या उससे भी पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का इंटरव्यूअर का होता है, आई एम सॉरी नॉट एग्जामिनर, आई डोंट नो मुझे एग्जामिनर और एग्जाम क्यों याद आ रहे हैं. आई हैव नॉट गिवन एनी एग्जाम सिंस पास्ट 4 years, बट मुझे फिर भी एग्जामिनर बहुत याद आ रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द फियर ऑफ आई कैप इज. Okay, so Muzammil, again hold your question for a bit and I'll answer. Idris, आपका question भी अभी हम आंसर करते हैं. तो yes, इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, एंड ये क्वेश्चन जो है ना, इसका एक पर्पस भी होता है कि व्हाई इट्स बीइंग आस्क्ड. तो जब आप एंटर होते हैं, यू काइंड ऑफ ग्रीट द इंटरव्यूअर, सलाम दुआ के बाद आप बैठते हैं. देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. बहुत क्लीशे क्वेश्चन है, हर बच्चे से पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. या दूसरा एक तरीका होता है यही सवाल पूछने का कि अगर मैं आपके किसी क्लोज फ्रेंड से कनेक्ट करूं या आपके किसी प्रोफेशनल कॉलीग से कनेक्ट करूं, तो वो आपके बारे में क्या बताएंगे. इसको पूछने का एक तरीका ये भी होता है कि टेल अस समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन योर सीवी. तो हाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए यू should thoroughly prepare beforehand. ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जाके आंसर कर दें. You need to be prepared, very well prepared for it. But preparation में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें. CV already इंटरव्यूअर के पास है, वो आपका नाम जानता है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जानता है, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने कॉलेज कहाँ से पढ़ा है, आपने A levels O levels कहाँ से किया है, कितने A's थे, कितने O's थे, क्या परसेंटेज थी, आई कैप के कितने एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं. He knows everything. You need to tell him something which is not there in the CV.
तो आपको एक केस बिल्ड करना पड़ता है। थोड़ा सा सीवी के से हटके आप अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताएं। मोस्टली सीवी में अचीवमेंट्स लिखी होती हैं बट दे आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीवी। इंटरव्यूअर शायद इतना डिटेल में उस वक्त नहीं पढ़ता, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स डू रीड इट एंड दे आस्क यू क्वेश्चंस इन दैट एज वेल। बट यू नीड टू अगेन स्पीक अबाउट यू एज अ पर्सन। आप बेशक अपना नाम बता दें, यू कैन टेल देम योर एज एंड देन यू कैन टॉक अबाउट what are your likes and dislikes, um, how why this profession, a very interesting question। आप हो सकता है इंटरव्यू आगे जाके पूछे बट आप अबाउट योर सेल्फ में ये जरूर बता सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अबाउट योर सेल्फ में ही बता सकते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 or 10 years। जब मैंने बात की थी ना कि मेकिंग अप योर माइंड, मेकिंग अप द इंटरव्यूअर्स माइंड कि उसने आपको लेना है या नहीं, वो जो पहला क्वेश्चन पूछता है अबाउट योर सेल्फ, उसी में वो डिसाइड कर लेता है वेदर ही वांट्स यू और नॉट, एंड दैट्स बेस्ड ऑन हाउ कॉन्क्रीट योर आंसर इज। 2 से 3 मिनट होते हैं आपके पास, यू कैन टेल ऑल ऑफ दिस। You can tell them your unique selling point, you can tell them why you can tell them you know, where do you see yourself in next 5 years, you can tell them why did you choose CA, you can tell them about your hobby there, hobby बाद में भी रख सकते हैं but you can also talk about your hobby there, you can talk about what you like in this profession the most, you can also talk about how do you want to contribute to this profession। This is all about yourself। मतलब about yourself का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सीवी रिपीट करें वर्बली। अबाउट योर सेल्फ का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू नॉट वांट इन लाइफ, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस जॉब और दिस ट्रेनिंग और दिस आर्टिकल्स फॉर यू। तो आप इस तरह की एक काइंड ऑफ क्वेश्चन या इस तरह की एक पैराग्राफ इज समथिंग दैट यू शुड हैव इन हैंड। उसको रटना नहीं है बट वो की बुलेट्स या की पॉइंट्स आपने अपने दिमाग में रख लेने। आई कैन टेल यू काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर इट। व्हेन यू आर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, you greet the interviewer, you sit, maybe he asks you, tell me about yourself, and that's where you answer, my name is, let's say, Marium Farooq, and I'm a chartered accountant by profession, just like I started my introduction in the beginning. That's there on my CV, but then again, आपने the profession बता दिया या आपने बता दिया कि you are a student, and then you can talk about why do you want to become a chartered accountant, why it is so important to you, why their firm is so important to you, what do you like about this profession, what do you want to be next 5 years, and why you, what is so different about you and not so of common in others. So this was one piece. The second piece which I think Shazeb asked कि strengths और weaknesses के बारे में पूछा जाता है। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के लिए शाज़ेब बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रेंथ्स बहुत इजी होता है बताना, आप बता देते हैं कि हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड हैं, टाइम ख्याल रखते हैं, टारगेट्स मीट करते हैं, काम है, गुस्सा नहीं आता है, टीम प्लेयर हैं। सो दीज आर द फ्यू स्ट्रेंथ्स दैट वी टॉक्ड। आप जरूर यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में बिकॉज ये बहुत जेनेरिक होती हैं। कोई इफ योर वाई यू आंसर इज वेरी वेरी यूनिक देन इट्स प्रीटी कूल। आप स्ट्रेंथ्स में जेनरिक स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। कमिंग टू द वीकनेसेस पार्ट, कुछ लोग होते हैं शायद कह देते हैं कि you don't have any weakness, which can't be the case. Then there is way of kind of rephasing your weakness or revamping your weakness। आप कह देते हैं कि मेरी weakness ये है कि मैं perfectionist हूँ। Now, being perfectionist is a strength, but आप कह रहे हैं कि वो आपकी weakness है, which is a fairly right way to answer. But I always suggest कि आप जब weakness answer कर रहे हो तो आप एक genuine weakness जरूर बताएं। It doesn't portray negativity, it portrays honesty. And then you should, kind of buffer it up with some weaknesses that are actually strengths. Yeah, you can also do it the other way. कि आप पहले ऐसी वीकनेस बताएं जो आपकी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि भाई मे बी आई रियली लाइक taking accountability of things which at times becomes stressful,
and which at times brings more work to me, क्योंकि मुझे अकाउंटेबिलिटी का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे काम लेने का बहुत शौक है, तो फिर काम इतना आ जाता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है. You can have something like I'm a perfectionist, that's why कभी भी मेरा काम 100% तो नहीं हो सकता, and that keeps me unfulfilled or unsatisfied. आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से या समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, उसकी वजह से डेडलाइंस मीट ना हो रही हो, तो आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. दैट्स अगेन strength within a weakness. And also then lastly you can, so आपने दो तीन ऐसी weaknesses बताई which are strengths in itself, and then at the end आपने ये बता दिया कि you are generally not a team player. Team player, I would not recommend कि आप बताएं कि you are not a team player, but you can say it this way कि I like doing things myself. I don't like others to do my work, या I don't like delegating my work. इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना सारा काम खुद कर लूँ, which again gives me a burden and accountability. तो वीकनेसेस आप बताएं, बिल्कुल बताएं, थोड़ा बफर करके बताएं. आई एम श्योर जब BMBS में आप लोग पढ़ते हैं नेगेटिव मैसेज और नेगेटिव लेटर्स, तो नेगेटिव लेटर से पहले एक बफर होता है, अब वो बफर दें, ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू आंसर द वीकनेसेस क्वेश्चन. आई हैव सम क्वेश्चंस हियर, उसके बाद हम मजीद FAQs पे मूव करेंगे. अच्छा इदरीस, योर क्वेश्चन वाज कि व्हिच सब्जेक्ट शुड बी रिवाइज बिफोर द इंटरव्यू. तो आप जनरली जो मैं सजेस्ट करती हूँ, कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आप गो थ्रू कर लें उनकी, अगर आपके पास समरी बनी हुई हो स्टैंडर्ड्स और बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग एंड गोइंग कंसर्न एंड लेट्स से आपका जो ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है, मुझे स्टैंडर्ड आइज 500 समथिंग, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें या ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज कर लें. बिकॉज एक बहुत क्लीशे टेक्निकल क्वेश्चन होता है कि वो आपको बता देते हैं कि कैश सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होगा ऑन कैश और ऑन बैंक और या अकाउंट्स पेबल अकाउंट्स रिसीवेबल. तो वो उस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा रिविजिट कर लें. द सेकंड पीस दैट यू कैन second subject that you should definitely do, because then again accounting is your core. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए. IS2, IFRS2, IFRS16, उसके बाद आपके रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है. So standards like these, you should have a grip on them. IS16, IS38, fixed assets, impairment, intangibles. ये कुछ core standards हैं जिसपे वो basic questions पूछता है. Deferred tax is one of the very pet area. तो आप वो रिवाइज कर लें. टैक्स के कुछ बेसिक लॉज रिवाइज कर लें, सच एज जो आपके टैक्स के हेड्स हैं, सैलरी एंड रेंट एंड स्टफ, उनकी टैक्स अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस होती है, टैक्सेबिलिटी अक्रूवल बेसिस होती है, कैश बेसिस होती है, किस तरह की होती है. डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे टैक्स के रेट्स पूछेगा, बट जनरल ट्रीटमेंट्स पूछ रहा होगा. सेल्स टैक्स में इनपुट क्लेमेबिलिटी नॉन क्लेमेबिलिटी पे मे बी वो कुछ पूछ लेगा. तो टैक्स, accounting and audit, these are the three things that you should revise before you go for the interview. Generally I don't like when interviewers ask any questions around business management theories. मुझे लॉजिक नहीं समझ आती, बट अनफॉर्चुनेटली द इंटरव्यूअर डू आस्क कि मैस्लोज थ्योरी क्या है एंड थ्योरीज लाइक XYZ. तो कुछ मोटी और जो कुछ फेमस थ्योरीज हैं मार्केटिंग रिलेटेड एंड सेल्स सेटिस्फैक्शन रिलेटेड एंड HR रिलेटेड, आप थ्योरी जरूर एक बार देख लें. दैट विल हेल्प, बिकॉज उसके अलावा तो BM के क्वेश्चंस में यू हैव टू पुट इन योर माइंड, जैसे हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस पे. तो that is something that you can do. Again, either is revisiting or repeating. You should do auditing. You should do accounting standards. You should do tax and BMK theories. These are the basics that you should cover when you go for the interview. Also, a tip, a trick, whatever you say. जो आपके peers आपसे पहले इंटरव्यू देके आ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल वो XYZ फर्म गए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उनसे कुछ एजुकेशनल सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. यू शुड आल्सो प्रिपेयर फॉर देम, बिकॉज इंटरव्यूअर जनरली क्वेश्चंस रिपीट करते हैं. तो अगर आपने 5-6 लोगों के एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस की का बैंक बना लिया है, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प. अच्छा, उसके बाद मुजम्मिल का क्वेश्चन था, अप टू व्हाट एक्सटेंट इंडस्ट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड. मुजम्मिल, आई एम नॉट रियली गेटिंग योर क्वेश्चन हियर, बट आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको इंडस्ट्री के बारे में कितना पता होना चाहिए. ओके,
This also relates to one of the FAQs that we have. बहुत pet question होता है interviewer का कि what do you know about their company or their firm. Firms के लिए तो बड़ा funny भी है कि हम भी जब अपने दौर में थे PwC का full form क्या है और KPMG का full form क्या है तो full forms याद कर रहे होते हैं. I mean that's how the questions are asked, so you should know what KPMG stands for and what PwC or what AFF stands for. थोड़ा सा I suggest you should know the background कि whether it's a Dutch company, a Dutch firm or an English firm or what, who were the founders of it. I suggest you should know. Again, gives an impression to the interviewer कि आपको चीजें पता हैं, the what part of the criteria. So that really helps. And then उसके अलावा आपको जनरली ये पता होना चाहिए कि जिस फर्म में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका क्लाइंटेल कैसा है एंड दैट यू कैन नो फ्रॉम योर सीनियर्स फॉर एग्जांपल कि कौन से क्लाइंट्स हैं फाइनेंशियल क्लाइंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स हैं बिकॉज फर्म्स के केस में वो आपसे फिर पूछते भी हैं कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस आप किस तरह के क्लाइंट्स करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट बिफोर यू चूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि वर्क फ्रॉम डील किस में करती है तो दैट्स इम्पोर्टेंट if you're giving an interview in an industry so it's very important that you know what that company's business is what their company's brands are I've seen cases where लोगों ने शायद brands उनको नहीं पता थे they quoted wrong brand names competitor के brand names बता दिए which is wrong so it's very important that you know the brand names what's the company's logo I mean not the logo the tagline या कुछ की ब्रांड्स की टैगलाइंस अगर उनके कोई बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं आपको उनकी टैगलाइंस पता होनी चाहिए बिकॉज टैगलाइन काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ द ब्रांड so you would get you can confidently tell them you know I know this is your purpose and I know this is your way of doing business तो मुज़म्मिल I hope that answers your question I think किसी ने मुझसे यहाँ पे पूछा था अच्छा हम उसको भी कवर करते हैं Muhammad Vagas, firm articleship is not counted in industry. Comment why? क्या मतलब है आपका not counted से? I'm sorry, I'm not getting this. Firm की articleship is under the ICAP trainee contract. जो 3.5 या 4 साल की articles होती है, that's under the contract. And when you enter the industry after that, it is considered as your training period. Why are you saying it's not counted? अच्छा वजाहत योर क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट बट आई वुड सजेस्ट अगर आप ये सीए काउंसलर्स पेज पे इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ लें तो देयर बी अ लॉट ऑफ पीपल who will be able to answer this well. I might not be able to guide you correctly on this. Waqar Ahmed, can you tell us about the difference between 1 and 2 interview call format? It's generally so Waqar होता ये कि interview या filtering की layers होती हैं पहले basic interview HR ले लेता है and then second interview partners के साथ होता है या first interview managers के साथ हो गया with the audit managers and second interview partners के साथ हुआ तो the only format is कि let's say 100 बच्चा है तो पहले HR उनको filter कर लेगा 50 shortlist करेगा उनको partner के पास भेजेगा so it's just like that a filtering process कि एक interview में आप final shortlisting कभी भी नहीं कर सकते so you add layers to it and you try to take opinion of multiple people एक ही बंदा decide करे तो that cannot be a very right decision तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि multiple लोगों को involve करें and इसलिए multiple interviews लें अच्छा जीशान has asked that weakness बताना ठीक रहेगा क्या negative effect नहीं पड़ेगा again जीशान I said आप अपनी weakness बताएं बफर करके बताएं for example weakness हो सकती है as I myself say that I get stressed out when there's a lot of pressure तो जब आप बफर कर रहे हैं उसको तो आप you can clearly say कि you know I always like taking accountability and doing all the work myself and that's how I get into stressful situations but then I try to manage it through maybe proper planning so this is you know आपने पहले कहा कि मैं accountability लेती हूँ काम करने का मुझे बहुत शौक है जिसकी वजह से मैं stressed out हो जाती हूँ and then how do I resolve it I try to resolve it through proper planning मैं अपने काम को phase out कर देती हूँ bits and pieces में करती हूँ small milestones में करती हूँ तो something like that आप देखें इंटरव्यूअर ने अगर आपसे वीकनेस पूछी है and which means he wants to know
आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बताएं, बफर करके बताएं. When we are applying in firm, is it okay to tell them I see my professional future in industry because firms are also looking for a resource to equip them in future? Muzammil, it is very fair to tell them that you see yourself in industry. आप कमिटमेंट ज़रूर शो करते हैं इस बात की कि आप जितना टाइम फर्म के साथ हैं, यू विल गिव योर बेस्ट. बट फ्यूचर एम्बिशंस ज़रूरी नहीं है फर्म के साथ हो, एंड फर्म फेयरली नोज दिस फैक्ट. So there's no harm in telling them that maybe okay, you can say कि आप 5 years down the line अपने आपको इंडस्ट्री में नहीं देखते, 10 years down the line देखते हैं, and that's very fair. So firms wouldn't take this negatively. Mohammed Zubair, can we mention informal experience in family-owned business in CV because experience certificate will not be available on demand by the interviewer? Zubair, interviewers कभी भी proofs नहीं मांगते. They trust you when you're writing something in the CV. They believe that it's true. Yes, जो आप जब आप बात करते हैं, आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि whether it's true or not. Very basic example जो मैंने हॉबी की दी थी, अगर आप लिख रहे हैं in the CV that you like reading, then he will ask you what writer do you read, and if you can't answer that, it's very obvious कि आपने सच नहीं लिखा. Similarly, if you think you have an experience in a family-owned business, you can write it there, but you should be ready that interviewer will ask questions on it, and you should be able to answer it. Bakas again, yes, experience wise, so articles कभी भी post qualification experience के तौर पे count नहीं होती. You're very right. Your professional experience starts, let's say once your articles end, if you're still in the firm on job, that experience counts. Otherwise, yes, industry doesn't count it. You are starting from a point zero. Should firm be our first preference or completing CA? Should firm be our first preference or completing CA? Very good question, Idris. Yes, your friends might have been asked this. Again, you should answer this very strategically. You should tell them that both are equally important and you believe in striking the right balance. इससे आपकी एक strength भी convey होती है कि the person is not one-sided and सारी efforts एक जगह नहीं लगी हुई. You can tell them that you always love to strike a balance between things. You love to strike a balance between your life, your personal and professional life, and similarly your firm, firm की training and your education. So you will always ensure that there's a right balance, but you will prioritize. अब जब आप कहते हैं ना कि ensure the right balance, तो वो कहेंगे कि भाई क्लास है और client close होना है, तो आप क्लास लेने चले जाएंगे तो client कैसे close होगा, which is very fair. And उसको आप इस तरह cover करते हैं कि you will prioritize. So there are times when class का जो topic चल रहा है, it might be less important, and वो initial होना account is more important. So you will prioritize. Striking the right balance and prioritizing other keys or the answers that you should give. Okay. So Wakas has again asked industry articles. So now Wakas, you're asking technically industry articles better hai ya firm articles in terms of experience. Even if you're doing an industry articles, it will still be considered as your articles period. because कभी भी job experience काम नहीं होता. तो it's just the same. अगर आप इस criteria पे compare कर रहे हैं कि industry जाना चाहिए या firm, both आपके जो training period है, that is counted as your training period. It is never counted as your job experience. Then I have a question. Okay, Ali has asked that can you once more elaborate about the product service which you were telling about which we can be asked to sell. ठीक है अली, हम थोड़ी देर में इसको एक बार दोबारा recap या revisit भी करते हैं. अच्छा, general knowledge questions we should have for interview. Basic economic factors, आपकी country की GDP क्या है, inflation क्या है, CPI क्या है, dollar किस तरह move कर रहा है, dollar की prediction क्या है, some key burning issues of the world, maybe CPAC के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो, it would really help. Brexit deal is a very pet thing these days.
Brexit deal अभी तक लॉक नहीं हो पाई है, maybe if you should know about that, that's going to help. So things like these, yeah. You know, US के इस वक्त internationally या globally किस तरह के relationships हैं, which countries are having problems, how is the Pakistan relationship with US. Maybe you can be asked about Pakistan and India relationship and how it is going to affect our economy. Uh, Very funny, but they may ask you about dam. I don't know. So something like that. Idris, I didn't get your question. Just a suggestion for to apply for category B firms, just for the interview, so we can experience it for the category A interview. Sorry, मुझे आपका question clear समझ नहीं आया. I think if you can elaborate it further, it will help. So we've taken a few questions at this point. अब हम थोड़ा सा again अपने FAQs पे जाते हैं. So we have talked about the about you question and your unique selling point. Unique selling point मैं अभी भी नहीं बता रही. आप थोड़ा सा सोचें and ponder that how you are different from others around you. Your strengths and weaknesses. Then जो तीसरा part था how well you know the company, जिस पे हमने during these questions बात की. आपको पता होना चाहिए brands, थोड़ी सी history, कब से कंपनी काम कर रही है. मे बी इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू विद अ फर्म, शायद आपको कुछ की पार्टनर्स के नाम पता होना चाहिए, फर्म का क्लाइंटेल पता होना चाहिए. देन behavioral questions, but यहाँ पे behavioral questions में scenarios नहीं हो सकते. There can be questions like the interviewer might ask you कि कोई ऐसा example दें जब आपने कोई unpopular या unrequired decision लिया हो, ऐसा decision लिया हो जो आप लेना नहीं चाहते थे, but you were bound to take that decision. And what did you feel at that moment? What did you felt? And how did you manage? How did you display patience and teamwork? तो आपको एक ऐसा सिनेरियो बताएं, maybe from your school or from your RAETs या कॉलेज टाइम से, कि जिसमें आपने टीम वर्क पोर्ट्रे किया हो, जिसमें आपने पेशेंस डिस्प्ले की हो. Then we can have questions around how you deal with work pressure. जिस पे हमने बात भी की, फॉर एग्जांपल कि 10 days का कोई क्लाइंट है, हाउ विल यू मैनेज इट. सो वर्क प्रेशर, आप प्रेशर में काम कैसे करते हैं, डेडलाइंस मीट करने की कोशिश कैसे करते हैं. whenever you ask how do you ensure that the deadlines are met, it's very important to tell them कि आपको जब कोई असाइनमेंट मिलता है, you try to break it down into pieces and you try to make a reverse timeline. डेडलाइन से 2 दिन बफर रख के मैं रिवर्स टाइमलाइन बनाती हूँ एंड माइलस्टोन्स डिटरमिन करती हूँ कि किस डेट पे मेरा क्या काम डिलीवर हो जाना चाहिए. एंड देन आई start working. Planning is very essential when you want to meet the timelines. So these are the questions that they may ask. Then I think किसी ने यहाँ question पूछा था reference related. I'm not sure. मुझे नाम नहीं recall हो रहा किसने पूछा था. But maybe if this one helps. So generally आप जब अपनी CVs या अपने form submit करते हैं with the forms, you're supposed to give names of 2 people as referees. ठीक है. एक सजेशन होगी मेरी कि जनरली हम करते हैं कि किसी भी फर्म के मैनेजर का नाम या कॉन्टैक्ट नंबर पता हो, या दोस्त के कजन के बेटे का किसी फर्म में कोई जॉब है तो आप उसका नाम लिख देते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे. आपको रेफरेंसेस में हमेशा उस इंसान का नाम देना चाहिए who knows you well and close enough and who can be contacted and who can tell about you. ठीक है. बिकॉज हमें लगता है कि these references are useless but firms do contact back. I have myself seen कि जहाँ जहाँ मैंने किसी की CV में अपने reference contact दिया है, I have got couple of calls in where the firms have asked me कि आप फला फला को जानते हैं या नहीं, and how do you know that person in terms of career, in terms of habits and all. So it's very important कि आप ऐसे इंसान का नाम दें जो आपको जानते हैं, because the interviewers then ask you कि will he recognize if we call him about you. तो अगर आप उस वक्त ये कहते हैं कि नहीं भाई ये मुझे जानता तो नहीं होगा, ये तो इतने दूर का कोई रिश्तेदार था जिसका मैंने नाम दे दिया है, तो इट्स गोना गिव अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन. इम्पोर्टेंट कि आप उसी का नाम दें जिसको आप जानते हैं. कुछ फॉर्म्स शायद टीचर के रेफरेंस एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ करती हैं. जो करती हैं उसमें आप उन टीचर्स का नाम दें who know you really well and who can talk about you. उसके बाद अच्छा रेफरेंस में then another question that they ask is कि अगर हमने इस particular this is more of a
अबाउट यू का क्वेश्चन जो कि रिफ्रेश करके पूछा जाता है कि लेट्स से XYZ बंदे का आपने नाम लिखा है जो आपको जानता है, एंड तो अगर हम उससे जाके पूछें कि मरियम को डिफाइन करो, तो वो मरियम को कैसे डिफाइन करेगा? तो इट्स अ वेरी सिंपल अबाउट योर क्वेश्चन कि आप बताएंगे कि वो मरियम को ऐसे ऐसे डिफाइन करेगा। ये 3 की वर्ड्स दैट ही विल यूज टू डिफाइन मी। तो वो 3 की वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अबाउट मी, maybe he might say hardworking, introvert, or maybe something like confident. तो इस तरह की चीजें 3 words जिससे वो आपको define कर रहा हो. These can be the kind of questions. उसके बाद for girls there's I don't know if there are much girls here because I don't see comments coming in from girls. But girls से पूछा जाता है generally कि whether you will be okay with late sittings or not. Again, the mantra of being honest and not manipulative. You can say that you prefer completing your tasks on time. However, there are situations where you need to sit late because pressures होते हैं, काम complete करना होता है, तो बैठना पड़ जाता है. तो डिपेंडिंग ऑन योर ओन प्रेफरेंस, फर्स्ट अगर आपको लगता है कि लेट सिटिंग्स आर फाइन फॉर यू, आप कह सकते हैं कि यू आर कूल विद इट, यू आर कूल विद sitting as late as guys do. If you feel that's fine, be honest, tell them. If you feel it's not fine and आप कभी कभी late sitting कर सकते हैं, तो you can tell them that you don't prefer late sitting each day and every day, but you're fine if the sorry kind of work is that, so you'll be cool with it. And if you think कि भाई late sittings बिल्कुल नहीं हो सकती, be honest, tell them, no issues. Because very important, आपके जो interviews होते हैं, once you get selected, आपको लगता है कि यार interview हो गया, interviewer भूल गया होगा आपको and आपके answers को. It's ironic but it's very true कि interviewer कभी नहीं भूलता आपने interview में क्या जवाब दिया था, उसे सब कुछ याद होता है. And अगले 5 साल आप फॉर्म में रहें, अगले 10 साल आप फॉर्म में रहें, वो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त आपके इंटरव्यू का वो जवाब याद करवा देता है कि आपने फला फला जवाब दिया था. इसीलिए आई प्रेफर के सेइंग कि भाई बी ऑनेस्ट, यू आर रिमेंबर्ड फॉर योर इंटरव्यूज एंड दैट्स वेयर द ब्रांड इक्विटी पॉइंट कम्स. यू आर रिमेंबर्ड फॉर इंटरव्यूज, सो मेक श्योर कि आप जो बात कर रहे हैं वो अगले 5 साल या जब तक आपने फर्म में रहना है या इंडस्ट्री में रहना है, वो बात याद रखी जाएगी. सो फॉर गर्ल्स आई वुड से बी ऑनेस्ट, do tell them what your preferences are. It shouldn't be any issue, and that's how you'll enjoy working. Then there can be one question around your greatest professional or maybe your greatest educational achievement. तो आप achievement discuss कर सकते हैं. This is the best part where you can again portray and say कि why you're so great and why they should choose you. Lastly, hobbies. Again, be honest. Cricket, book reading, music, और जनरल हॉबीज है, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ऐसे जाके मत कहिएगा कि कोई हॉबी नहीं है, बिकॉज दैट्स अगेन नेगेटिव कि आपकी अपनी कोई सोशल या पर्सनल लाइफ ही नहीं है. टेल देम दैट यू हैव सम हॉबी. अगर हॉबी नहीं भी है तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लें अबाउट दैट हॉबी एंड टॉक अबाउट इट. ओके, उसके बाद मुजम्मिल का एक क्वेश्चन है. सो दिस इज ऑल अबाउट द FAQs पार्ट. एंड लास्टली जो हमने बात करनी है वो की वॉच आउट्स पे करनी है. टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हम क्विकली पहले कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं, उसके बाद की वॉच आउट्स पे बात करते हैं. Muzammil, when will Unilever open inductions? It will save from unnecessary mental pressure. I just wonder why it is giving you any mental pressure, Muzammil. But please follow the Unilever Careers Facebook page, and जैसे ही inductions का process start होगा, the post will be up there and you will get to know of it. तो आप follow कर लें page को and you will get to know about it. Should personal relationships to references be mentioned or not? So Idris, I think जब वो आपसे form में fill करवाते हैं वहीं पूछ लेते हैं कि how do you know the person, and you should mention it. Maybe he's your uncle or your cousin or your whatever. You should put that up. That's not an issue. Shouldn't be a problem. So yes, Idris, that's pretty fine. आपने बिल्कुल ठीक किया. There's no issue with that. Okay, I know it's open-ended, but what if someone is going to start his business, would want to complete CA to do? वकास, I think कि आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप ये
इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कैन यू टेल दैट टू द फर्म पीपल? इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट? अच्छा, एक चीज़ कमिंग फ्रॉम योर क्वेश्चन वकास, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इंटरव्यूअर को ये बताएंगे कि भाई मैं अपना कोई स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ, अपना ही बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इट माइट गिव अ फीलर टू हिम कि आप फर्म को टाइम नहीं देंगे. एंड सो या नाउ आई गेट योर क्वेश्चन. सो यू आस्क्ड इनिशियली कि भाई अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप सीए कंप्लीट करना चाहते हैं या आप फर्म को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है. आई वुड सजेस्ट यू शुडंट टेल एनीथिंग लाइक दिस कि जिसमें ये पोर्ट्रे हो रहा हो कि आप ये सिर्फ जो है अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं एंड आपका जो फर्म में भी टाइम है वो बिजनेस पे गुजर रहा होगा. इट विल बी वेरी नेगेटिव. यू हैव टू शो कमिटमेंट, यू हैव टू शो देम कि आप अपना वक्त देंगे फर्म को एटलीस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. सो जब हमने बात की कि वाई यू एंड वाई नॉट अदर, आप खुद सोचें. इफ यू गोना टेल देम दैट यू are just going to give a 9 to 6 time to them and that to a very unattended and unfocused one just because you are more focused towards your own personal business, why would the interviewer want you? The interviewer would prefer having someone who is more committed. He would want someone who doesn't have any any needs to kind of go for a personal business. So for us, you need to be a little careful about this piece. I mean, you can't be very blunt and you can't just say कि भाई मैं सिर्फ सीए करना है इसलिए फॉर्म आ रहा हूँ. Shouldn't be like that. ओके, मोहम्मद हुसैन अमजद, टैक्स और ऑडिट आर्टिकल्स. जनरली अब फॉर्म्स का फॉर्मेट इस तरह का हो गया उससे कि दे गिव यू एन एक्सपीरियंस ऑफ बोथ. फॉर इंस्टेंस आई नो अबाउट पीडब्ल्यूसी, दे मेक श्योर कि आपको रोटेशन मिले एंड देन दे टेक यू टू टैक्स. Not really sure about other firms, but if you have to choose tax or audit, I would always suggest audit because it keeps your horizons broad. I mean, it keeps your options broad. Tax में जाके maybe you will have to then pursue a career in tax only. आपके options limited हो जाते हैं. Just because of that, I would suggest audit. But otherwise, firms mix experience दे रही होती हैं, firms and industry both. Okay. ओके अली, सो यस अली, हम की वॉच आउट्स के बाद आपका ये जो एरिया है प्रोडक्ट और सर्विस वाला, वी विल काइंड ऑफ revisit or let's say elaborate this piece. अच्छा, so for key watch outs बहुत important है that you should be there on time. बहुत क्लीशे बात है लेकिन फिर भी स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, फिर भी लेट पहुंचते हैं. When you know your interview is gonna be let's say at 11, you need to make sure that you are there by 10:30. 15 मिनट नहीं, आप 30 मिनट पहले पहुंचे, अपने आप को रिलैक्स करें, have some water, have some breathe, ताकि इंटरव्यू में जाने से पहले आप sweaty and stressed out ना हो. So it's really good that you be there before time, way before time. अपने आप को सेटल करें वहाँ पे वेटिंग एरिया में. you can do that. So very important for you to be on time. If you are taking someone along, waiting areas are there. You can have your someone accompanying you being there. The second piece is हमने जो बात की थी on the asking questions bit, जो conclusion बना रहा होता है जब interviewer at the end of the interview, he wants to make sure that you are also participating and it's not a monologue. तो बहुत important, वो आपके लिए फ्लोर खोलता है कि do you have any questions, do you want to ask any questions, and because you're so stressed out, you're so freaked out, आप नहीं पूछते, you were like no thank you, that's it. That's a very important opportunity that the interviewer has given you. वो चाहता है कि वो देखे कि आप कितने interested है in their company, in their firm. So it's important that you ask questions. So कुछ general questions जो I think that can be asked and which the interviewer will not mind is, so for example, you can ask interviewer about his strengths or weaknesses. You can ask interviewer that what success means to him. You can ask interviewer that what is the 5-year plan of their company or firm. You can ask the interviewer that what are the key objectives or key thrives of their firm or industry for this year. You can ask the interviewer that how does a day in XYZ firm looks like, whether it's fun, it's
pressure, it's shore sharaba, it's what. So things like these आप जरूर कोई ना कोई at least एक question. I mean, I'm not saying a lot of questions, but one question, it gives the impression to the interviewer कि आप relaxed हैं, आप interactive हैं, आप interested हैं in this job. तो बहुत important है कि आप कोई question पूछें. जो कुछ मैंने examples दिए, you can use them. आपको यहाँ creative होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो you can surely use them. So मैया बस अभी हम next dressing पे बात कर रहे हैं, and then हमने कुछ बात करनी थी on the postures and the dressing. So first we'll talk about dressing and we'll start with the girls here. बहुत important है कि you dress according to the event, right? It's an interview, it's not a shadi, it's not a party. So please accordingly dress kare. Going from top to bottom, if I talk about hairs, um, you can keep your hairs open or you can keep your hair tight, but make sure they're neat and clean and they're not coming on your face. Properly, like distraction नहीं होनी चाहिए. जब आप interview के वक्त बैठे, you shouldn't be doing something like बार बार आप अपने बालों को set कर रहे हैं. If you have long hair, maybe the girls have their hair on here on the shoulder, and it doesn't just give a good impact to the interviewer. उसको उलझन होने लगती है. So your hair should be tied up, or even if they're open, they should not be messy. या आपको बार-बार अपने बालों को touch ना करना पड़े. Make sure of that. From the jewelry piece, if I ask, please don't wear any झुमकास or any dangling jewelry in your ears. छोटे studs पहन लें. अगर आपकी multiple piercings हुई हुई हैं, preferred कि आप rings ना पहने, studs पहन लें. Looks professional, looks good. बहुत ही flashy jewelry ना पहने. Something in hands, maybe you can wear a very smart watch and a ring or two, that's fine. Doesn't really affect. Makeup, keep it minimalistic. ज़रूरी नहीं है कि आप red lipstick या pink lipstick लगाकर ही जाएं. And मैं ये भी नहीं कह रही कि you shouldn't put on makeup. The makeup gives something that gives you a fresher look, but not a very colorful look. शादी नहीं है. So very light blush on, mascara, a very nude colored lipstick maybe. So it gives that fresh look to your face. Do that. Then I talked about wristwatch. You should definitely carry your bag or a clutch, but I always recommend कि आप छोटा bag लेके जाएं, something like a crossbody bag, जिसमें आपकी basic phone वगैरह हो, and your CV should be kind of in a folder or something. तो छोटा सा बैग लेके जाएं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो. आप वहाँ टेबल पे रखते हैं, नीचे रखते हैं, कैरी करना बहुत weird फीलर आता है इंटरव्यूअर को. So carry a very small bag with yourself. उसके बाद we need to talk about the perfume piece. You should put on some perfume, but a very mild one, not a very strong one, which kind of creates uneasiness for the interviewer. From the colors, I would say you should wear something pastel. Or even if you're wearing prints, it's fine, but don't wear reds or pinks. You can maybe wear blues and blacks, and maybe if you want, you can wear whites as well. But wear something pastel, light colored, जो आप daytime पे पहनते हैं, बहुत bright और बहुत flashy colors ना पहने. Doesn't really give a good impact. And lastly, heels, stilettos या pencil heels avoid करें. I would always recommend you wearing flat pumps, or if you like something very chicken classy in terms of wearing kitten heels, that's fine. Sneakers na pehne, please. Sneakers is not professional. Sneakers or joggers are not professional, so you shouldn't wear them, at least in an interview. Shayad aap firm jaye tab pehen le, but in an interview, it's clearly a no. No sneakers, no joggers, no jeans as well. Jeans is not formal. You shouldn't be wearing it. So quickly repeating, hair, even if they're open, you shouldn't be touching them very often. उसको इस तरह से settle करेंगे, you don't have to touch them. Your hair should be, or you can tie your hairs. Minimalist jewelry, studs पहने, no tangling jewelry, a wristwatch and maybe a ring or two. Basic makeup, which is not very colorful, but it gives you a fresh look. And it gives a look to the interviewer कि आप थोड़ा सा prepare होके ready होके आए, अच्छा लगता है. Mild perfume, then you should have small bag or clutch with you, and no jeans, no sneakers, pumps, flat. I don't even prefer any flat sandals. I would always say wear something that is covering your feet. It gives a good and a professional look. तो वो करें. One basic etiquettes में है for both boys and girls. Please chewing gum खाते हुए मत जाएं इंटरव्यू में. You shouldn't be chewing anything.
and put your phones on a silent mode. Girls, you can put your phones in your bag. ज़रूरी नहीं है कि आप phone लेके जाके table पे रखें. Boys, if you can keep them in your pockets, or if you want to keep them, maybe you can put it on the table. But it should be on a silent mode, and vibration भी बंद होनी चाहिए उसकी, ताकि disturbance now when you're giving the interview, आपके लिए भी distraction now. So moving on to the dress code for boys. Generally preferred कि आप सूट पहन के जाएं. अगर आप सूट पहन के नहीं भी जाना चाह रहे, it should be a white crisp shirt. White is a very good color to wear in an interview for guys. So white crisp shirt with a tie, black, gray or blue dress pant, neat and clean polished shoes. Your hair should be clean and properly, done. आपको भी बालों को बार बार टच ना करना पड़े. Doesn't give a good impression. If you have any piercings, please don't wear them. And then lastly, a wristwatch looks good and very smart. You should wear it. Mild perfume, again, something that doesn't irritate your interviewer. So this was about dressing. Quick questions around this you can ask. Ali, the answer to the current economic conditions of Pakistan can be a mix of all the conditions. So you can talk about a lot of things. You can talk about CPAC, you can talk about GDP, you can talk about inflation, you can talk about the fuel prices and the gas prices. So things like these, you can definitely talk about them. Lastly, we're talking about the body posture. When you walk into the room, greet the interviewer with a smile. For guys also, I would suggest maybe you can have a firm handshake in the beginning, and then you sit on your chair, sit straight and firm. I mean, आप झुके हुए थके हुए ना बैठे, सीधे होके जो आपकी chair है उसकी back पे अपनी back लगाएं and बैठे. Maybe your chair is very lean, तो फिर बहुत lean होके भी relax होके भी ना बैठे. You need to sit straight. You need to change your postures during the interview. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरव्यू रूम में जाके बैठे and you folded your hands, you're sitting like this for the whole interview. You just can't do that. You shouldn't do that. You should change your postures as and when the interviewer changes their posture. So maybe the interviewer is kind of leaned towards you and talking about something. आप nod करके कोई बात आपसे हो रही है, and if you agree to it, आप nod करें, affirmation दें. कोई बात आपको बता रहे हैं and you are expected to be listening to it carefully. You should have an eye contact with the interviewer. आप थोड़ा सा maybe lean forward, put your hands on the table and listen to the interviewer carefully. So the posture should keep changing, but not a lot. Like ऐसा ना लगे कि आप fidget कर रहे हैं and आप stressed out हैं या freaked out हैं. Relaxed है, लेकिन जब आप बात सुन रहे हैं, you can maybe lean forward, lean backward. बहुत lean backward ना बैठे, पैर फैला के ना बैठे, and you need to kind of sit straight. उसके बाद you should smile, but not smile throughout the interview. पता चला वो serious बात कर रहे हैं and you just smiling, the interviewer might feel कि आप यार उनका मजाक उड़ा रहे हैं. Smile करें जहाँ ज़रूरत है. Otherwise, give that serious look as well. Good to have eye contact. I rather say have a face contact. So face contact is something. Eye contact जो है ना आपको थोड़ा सा confuse कर देता है, that you are very straightly looking into their eye, which can be discomforting for you. So maybe 2 seconds on their eye and then their nose and their lips in the air. So something you revolve around their face and you're looking at their face. So this is what you should do throughout. जब आप answer कर रहे हैं, please नीचे मत देखें, उनकी शक्ल पे देखें, वो आपसे बात करें, आप उनको देखें. नीचे देखने की नीचे देखना gives a very less confident image. So that's it on this piece. Okay, you should also avoid words like and like and बहुत बार so even I say this a lot when I'm talking, but interviews may try not to be repeating words like and maybe so things like these. When you're leaving the room for guys, you should shake hands with the interviewer. A firm handshake, it really matters. Don't touch yourself too much. It doesn't give your face or your hair or your hands. Don't touch them a lot. You can use your hands to express yourself, which is fine. But make sure that you don't sit like cross-hand, because that gives a non-welcoming message. You're not welcoming to what the interviewer is saying. So these were
some body postures that we discussed. I think we covered all of them. So yeah, that's all from the body postures piece. Acha, ab any more questions, you can put it up on the comments and then we can answer them. The floor is open for you guys. Ali, you had a question regarding the product or the service. So for example, अगर मैं एक example build कर लूँ कि मुझे एक speaker है, it's a Bluetooth speaker that I have to kind of start the business of. तो मैं क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करूँगी व्हेन आई हैव टू डू इट्स कॉस्टिंग, कि मुझे इसकी बाइंग कहाँ से करनी होगी। फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ कि बाइंग लोकल होगी, इंपोर्टेड होगी, मेरे सप्लायर्स कौन कौन होंगे, सप्लायर एक होगा या मल्टीपल होंगे, मल्टीपल सिंगल सप्लायर हुआ तो मेरी हाउ विल आई इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, मल्टीपल सप्लायर्स हुए तो क्या क्वालिटी इंश्योर होगी कि हर सप्लायर से मुझे सेम प्रोडक्ट मिल रहा हो। तो ये बिजनेस एस्पेक्ट्स थे कि मैंने सप्लायर इंश्योर किया, सप्लायर इंश्योर करने के बाद सप्लायर कोट्स ली, विच सप्लायर्स आर द बेस्ट, इंपोर्ट सस्ता है, लोकल सस्ता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड। द सेकंड पीस के मैं ये स्पीकर बेच किसको रहा हूँ, इज इट अ वेरी हाई क्वालिटी हाई नीश प्रोडक्ट जो कि लग्जरी है, क्योंकि लग्जरी होगी तो बहुत कम लोग बाय करेंगे, क्योंकि बहुत लग्जरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सपेंसिव हो, अदरवाइज वो कभी लग्जरी ट्रीट नहीं होगा। Similarly, because luxury है कम लोग खरीदेंगे, so it has to be expensive so that you can drive the profitability and the required margins out of it. तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका कंज्यूमर बेस किस तरह का है। Once you have done that consumer based thing, so यहाँ पे business management के principles mostly apply हो रहे हैं। Your product, your pricing again, कि आप प्राइस कैसे करेंगे, that will be based on how your consumer is, packaging किस तरह की होगी, आप उसको अपना USP बनाना चाहते हैं कि जो आपके speakers की packaging है that's maybe through recycled stuff, environmental friendly, sustainability agenda पे बनी हुई है उसकी packaging, that will be an added point for you. इस तरह की चीज़ों के करने के बाद you will put up your cost कि मैंने अगर ये पैकिंग यूज़ की, ये सप्लाई यूज़ किया, ये कस्टमर है, प्राइस ये है, मेरी कॉस्ट ये होगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाके बैठती है। अच्छा, देन लेट्स से मैं कहती हूँ कि जो मेरा ROI है या रिटर्न, not the ROI, I would say the profitability on a product is, let's say or 6 से 7% or maybe a 30% gross margin with an ROI of 6 to 7%. Is it fruitful enough? How will you compare कि अगर मैं उसी पैसों से जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, जाके एक सेविंग्स अकाउंट में डाल दूँ, तो what is the income that I'm going to yield? So you kind of have to show the interviewer a comparison कि आपका business acumen कैसा है, कि whether can you gauge it today only कि आपका business profitable enough है कि आपको उसमें land करना चाहिए, or you would rather prefer going towards conventional investment methods. So things like these. Similarly, अगर आप सर्विस कंसर्न की बात करें, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन टू स्टार्ट अ केटरिंग बिजनेस, तो आप केटरिंग बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं फैक्टर करेंगे अपने माइंड में, कि आप एक कंपनी है केटरिंग बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ कितने लोग काम करते हैं, उनकी रिलीजन की वजह से priorities या needs of food क्या हैं, they need veg, they need kosher, they need beef, mutton, what would they need, क्या generally maybe हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो आपको हेल्दी ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। if there are more of desi people who would want kadhais and niharis, so you need to have your menu drafted according to that. तो आपको केटरिंग बिजनेस में पहले गेज करना पड़ेगा कि किस तरह के लोग इस कंपनी में काम करते हैं, व्हाट इज योर मेन्यू गोइंग टू बी लाइक, हाउ आर योर सप्लाईज गोइंग टू कम लाइक, उन सप्लाईज को मैनेज कौन करेगा, बिकॉज इन अ केटरिंग बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास टाइमली सप्लाईज अरेंज हो, क्वालिटी नीट एंड क्लीन सप्लाईज हो, ताकि आप क्वालिटी फूड डिलीवर कर सकें। एंड देन व्हाट इज योर पर मील प्राइस गोइंग टू बी, तो आपने यू काइंड ऑफ वर्कड आउट के मेरी कॉस्ट आएगी पर मील 100 एंड आई नीड टू पुट अ पर मील 150 रुपीज़। अगर कंपनी सब्सिडी दे रही है तो मैं पर मील क्या चार्ज करूँगा, अगर consumption base बढ़ जाता है कि company is saying कि let's say only 100 people will buy from you, but the next day company tells you कि भाई हमारी catering service हमें 200 लोगों के लिए चाहिए, तो maybe your price will decrease. So factors like these. So you see, here the interviewer is not expecting one final answer from you. He's just going to see your thought process. So जिस तरह से मैंने different aspects की बात की,
You need to talk about these different aspects in the interview for them to understand क्या आप सोच रहे हैं as a business person. So I hope Ali that helps. Agar you need further clarity on this, we can discuss. Muzammil, if there's a female interviewer, if you are comfortable and if she extends her hand for a handshake, that's fine. Otherwise, if you don't want to, that's fine too. Not really required. Maybe if she brings in the hand, she prefers a handshake and you don't, you can excuse. That's fine. It's nothing rude. आप मना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके असद, वेरी राइट क्वेश्चन. अगर आपसे कोई एजुकेशनल सो असद, अगर करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको आंसर याद नहीं है, आप बता दें कि आई कांट रिकॉल एन आंसर टू इट एंड दैट शुड बी फाइन, कोई मसला नहीं है. बट अगर जेनरिक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह की हमने अभी बात की बिहेवियरल एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, सो उन क्वेश्चंस में आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि आप आंसर करें बिकॉज आप आपका थॉट प्रोसेस देखना चाहते हैं. देयर यू शुडंट से दैट यू डोंट नो द आंसर. सुल्तान मिर्जा, दैट डिपेंड्स फर्म टू फर्म कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. Can't have one answer to this. So guys, this was from my end. अगर हमारे पास और questions हैं तो we can take them. If not, then we will call it a day for today. I will wait a couple of more minutes to see if any of you have further questions. Assalamu alaikum, Ramsha. Ali, I hope you have understood the idea that we had been discussing and it was clear. We had been discussing and Idris, then again, if you have to choose, अगर आपको choose करना पड़ रहा है between advisory, tax and audit, not one answer to this. Again, I would always suggest कि आप audit में अपना ज़्यादा time गुजारें ताकि आपके पास options ज़्यादा रहें, आपका core develop हो. But if it's a very good firm and if you want to be a part of that firm and there you are being offered advisory, no harm taking it. Maybe you can craft your career and your growth out of that as well, but I would recommend you go for audit. Shazib, no, I'm not a teacher. I'm not. I hope I've answered all the questions. Thanks, Ali. I hope that was helpful. Okay, guys, I think we don't have any further questions. Okay. So Muzammil, maximum number of hobbies, I think एक या दो बता दें, काफ़ी है. अगर आप बहुत ज़्यादा बताएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पढ़ाई भी होती है या नहीं, या काम भी करते हैं या नहीं. 1 or 2 hobbies is fine to tell. Yeah, but again, you should know what the hobby is through and through. Reading, even songs, अगर आप कहते हैं आप अच्छे से जानते हो, to some good singers which you can talk about. एक हॉबी बेशक बताएं, बट ऐसी बताएं जिसके बारे में you can talk enough with the interviewer. बहुत बार होता है कि जो आपकी हॉबी है उसमें इंटरव्यूअर का बहुत मेजर इंटरेस्ट है, तो वो फिर आपकी जो है ना लेना शुरू कर देते हैं.
Okay, so that's about it. Okay, more comments. Hasib, what we should answer in question regarding tell us about yourself. I always um, write. I always suggest कि आप वो चीज़ें बताएं जो इंटरव्यूअर को सीवी में नज़र नहीं आ रही. तो एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ विच इज़ नॉट इन द सीवी विच इज़ प्रोफेशनल. मे बी आपकी कोई स्कूल रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं, मे बी योर की सक्सेसेस, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट देयर इन द सीवी. इट डेफिनेटली कैन नॉट बी. इफ यू आर मे बी 18-19 years of age, all of that is not in the CV. आप you can go through the video session to kind of revisit. मैंने कुछ specific चीजें बताई हैं which you can discuss. You can discuss why CA. You can discuss how you see yourself in next 5 years, next 10 years. You can discuss what you like about this profession. You can discuss what you want to change about this profession. Again, this is not all about you, but it's coming from within you. So it's very fair to answer all of that piece. आप अबाउट यू में ही डिस्कस कर सकते हैं कि आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है. यूनिक सेलिंग पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज के पूरे सेशन में उसकी कोई एग्जांपल नहीं दी है, एंड उसका सिर्फ रीज़न ये है दैट आई वांट यू गाइस टू थिंक of it yourself. You know yourself as a person more than anyone would know, so you should know how different you are. तो आप वो चीज़ बता सकते हैं as a selling point. You can talk about your qualities, hobbies. ये सारी चीज़ें बेशक वो बाद में पूछेगा, लेकिन जब वो आपसे अबाउट यू पूछ रहा है, you can tell that. For example, whenever I would go for an interview and whenever they ask me about myself, what I do is generally my job history or whatever my role history is like, I tell them about the achievements at each of it. One achievement per role is what I tell them. So that is also something you can talk about, your greatest achievement, so something like that. Okay, Ramsha very rightly said, confidence is the key to success and honesty is another one. You shouldn't try to manipulate your interviewer. He's very smart. Um, 2 more minutes. We'll close at 8:45 and taking some last few questions. Sayed Kazmi, how can I convince interviewer that I can perform better in assurance compared to others? So it's your body language, it's your attitude overall, Kazmi, that tells the interviewer that you're good enough. So definitely आप उस 20-25 मिनट में उसको कोई काम करके नहीं दिखा रहे हैं on the basis of which he will be able to judge you. What he will be able to judge you through is your commitment that you can show, through your thought process that you are going to reflect, through your professional background or your educational background. आपके grades अच्छे रहे, they will think you perform good. आपने technical questions, educational questions, जो syllabus related questions है उनके answer अच्छे दिए, they will know that your core is better. So they're looking for a complete package. They want someone who's confident, who can speak well, who can work well, who can show commitment, जिसको काम आता भी है, जिसको audit भी आता है, accounting भी आती है. तो आपने बस proof करना है कि आपको सब अच्छा आता है. And ऐसा नहीं है. So there might be areas where you would not be really good. Be honest about it. That's fine. But tell them that this is what you are there for, right? You are there to be trained, and you are committed towards performing better. You would love to learn, and you would love to be part of their firm. So yeah, from this I recall one piece. आप जब closure दे रहे हैं अपने interview का, when there's a part जिसमें आप अब question पूछ रहे हैं interviewer से, you can kind of end it with the statement that you would love to be part of their firm or their company or their team. So जब second interviews होते हैं, they are mostly with the partners or the managers, and if you know them, if you've heard about them from earlier, from your seniors or someone, आप उनसे कह सकते हैं कि I would love to work in your team when I join the firm. So that could be one of the ways to show that you are committed enough, you like to do what you are there for. So that's about it. I hope the session was helpful, guys. I would really be happy if you can give a feedback on this. You can message me. You can put up a message on the CA Counselors online lectures page. Feedback really helps me grow as well. जिस तरह से आप लोग learning के process में, I am myself in a process of learning, so it will really help if you guys give your valuable feedback. And thank you for attending this session, for showing your interest.
and I hope it was helpful enough. So hopefully we'll see you guys again. Take care. Bye. Allah Hafiz.